Welcome back and thank you for being tuned in to Times Now. Live visuals coming in of the Prime Minister's roadshow in Gandhinagar. It's a rousing, grand welcome for the Prime Minister. And as we saw yesterday as well, the Prime Minister being welcomed with the Tiranga all around, a sea of Tiranga that you can see all around you as the Prime Minister is being welcomed by the supporters in a tribute to Operation Sindoor. Yesterday, as well as the Prime Minister was in Gujarat, he gave a clear warning to Pakistan saying, focus on your own economic progress, otherwise India will teach you a lesson. So the Prime Minister has given a message to Pakistan. The Prime Minister is in Gandhinagar as part of the two-day visit to Gujarat, today being the second day. He received a rousing welcome with supporters lining up through the streets to get a glimpse of him. At the moment, the Prime Minister has reached the Mahatma Mandir in Gandhinagar. In fact, he's also holding a roadshow, as you can see in the visuals on your screens, ladies and gentlemen. Huge crowds that have gathered to catch a glimpse of the Prime Minister, of course, flying the national flag with all the pride, especially after the success of Operation Sindoor. Remember, the people have gathered there not just to catch a glimpse of the Prime Minister, but also to convey their gratitude and pride in what the Prime Minister and the government and the armed forces have been able to achieve under Operation Sindoor. This is the second day of Prime Minister Modi's visit to Gujarat. Remember, there was a mega roadshow yesterday as well, where he received a warm welcome from the crowds there. Today, of course, this Operation Sindoor Samman Yatra that is being carried out, a roadshow that is being carried out in Gujarat by the Prime Minister. As you can see, celebrations and pride has filled the air. Remember, people who have come from all walks of life have converged in Gandhinagar today to make sure that they convey what they feel about what the government has been able to do under Operation Sindoor. That is giving a befitting response to terrorism and their masters. My colleague Hiten is tracking the visit of the Prime Minister. Let me quickly go across to him and understand what's happening there. Hiten, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? बहुत सेलिब्रेशंस और एक मेगा रोड शो हो रहा है. प्रधानमंत्री महात्मा मंदिर पहुंच गए हैं. अब बिल्कुल देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वो जो काफिला था रोड शो से वो महात्मा मंदिर पहुंच चुके हैं. कुछ ही देर में महात्मा मंदिर से वो गुजरात के शहरी विकास मंत्रालय के वर्षगांठा की 20वीं वर्षगांठा की वार्षिक शुरुआत वो करवाएंगे 2025 की. और उसके अलावा वो गुजरात को ही नहीं बल्कि पूरे देश को करीब 5000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं. पीएम आवास के जरिए कई लोगों को आज उनका मकान भी वो वहीं से दिलाएंगे महात्मा मंदिर से. और अन्य कई जल शक्ति मंत्रालय की योजनाएं हो या फिर अन्य कई सड़क परिवहन मंत्रालय की योजनाएं, उसका तक वो लोकार्पण महात्मा मंदिर से करने वाले हैं. देखिए, आज का ये जो कार्यक्रम है वो बेहद ही ज़रूरी कार्यक्रम हो जाता है, क्योंकि 20 साल पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब उनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था गुजरात के सभी सिटीज़ को डेवलप करना, अपने दम पर करना, क्योंकि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट थी वो मोदी को पसंद नहीं करती थी, वो मोदी को सपोर्ट नहीं करती थी. तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने खुद के दम पे जिस तरीके से गुजरात के सभी शहर को मेट्रो सिटीज़ का दर्जा दिलाया, A+ सिटीज़ का दर्जा दिलाया, वो उसकी आज 20वीं वर्षगांठ भी मना रहे और 2025 के वार्षिक महोत्सव की वो शुरुआत भी करवाने वाले. तो कहीं ना कहीं आज के उनके संबोधन से वो पूरे देश को एक मैसेज देंगे, उन राज्यों को भी मैसेज देंगे, विपक्ष के उन स्टेट्स को भी वो मैसेज देंगे कि किस तरीके से एक स्टेट के सिटीज़ का डेवलपमेंट जो एक विजन के साथ किया जा सकता है और उसे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है. उसके अलावा मैंने जैसे बताया कि 5000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी वो पूरे देश को देने वाले हैं. कई लोगों का सपना साकार करने वाले हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ हो या फिर छोटे शहर हो, अनुमन घर खरीदना, खुद का घर खरीदना, वो एक आम आदमी का, छोटे परिवार का एक बड़ा सपना होता है, वो कभी पूरा नहीं होता है. तो ये पीएम आवास वाली जो योजना है उसके तहत आज वो कई लोगों को घर देंगे, उनका सपना साकार करेंगे, वो अपने खुद के घर में अब आने वाले दिनों में रहते नजर आएंगे. तो इस तरीके की कई
योजना, ये सारी योजनाएं जो आज 5,000 करोड़ की योजनाओं की जो सौगात वो देने वाले, ये सारी योजनाओं का मिश्रण जो है वो आज के इस शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में जरूर दिखेगा। आज से भी, आज यहाँ से महात्मा मंदिर से भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान को तो एक कड़ा संदेश देंगे ही देंगे, क्योंकि हमने देखा चाहे दाहोद हो, दाहोद में भी उन्होंने सीधे तौर पर मैसेज दे दिया। भूज पहुंचे तो भूज से सीधा संदेश पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के यूथ को दे दिया कि आप डेवलपमेंट चाहते हैं या आतंकवाद का साथ चाहते। तो जब आज दूसरे दिन अपने गुजरात दौरे के आखिरी दिन जब महात्मा मंदिर से भी वो संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर आतंकवाद के खिलाफ तो उनकी आवाज गूंजेगी, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ चलती लड़ाई के साथ साथ देश का विकास किस तरह आगे बढ़ रहा है, देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है और कितनी तेजी से वो आने वाले कुछ महीनों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इसका विजन तक प्राइम मिनिस्टर के भाषण से दिखेगा। Ji Hiten, bilkul, as my colleague viewers Hiten has been telling us, the Prime Minister, of course, there on your screens being felicitated, being given a warm welcome in Gandhinagar. He's at the moment at the Mahatma Mandir Convention Center, where he's going to be inaugurating and dedicating to the nation several developmental projects related to urban development, health, as well as water supply. And this is also significant because this year marks 20 years of the urban development year that the Prime Minister had started in the state of Gujarat as Chief Minister back in 2005. And 20 years later, he's going to be launching the Urban Development Year 2025 from this very place. Gujarat's Urban Development Plan as well as the State Clean Air Program is what the Prime Minister will be inaugurating from here. Of course, under the Pradhan Mantri Awas Yojana, he's going to be dedicating several homes to the needy as well. Right now, I'm joined by Professor Madhav Nalapat on the phone line with us. Professor Nalapat, you know, just the fact that the Prime Minister has been holding road shows, he's been getting very warm, rousing welcome and gratitude by the people who've lined up, converged there to welcome him, to convey their gratitude for Operation Sindoor, reflects what the citizens feel of what the Prime Minister and his government have done. Look, Operation Sindoor was a clear firebreak from past tradition. First of all, India made it very clear that any perpetrator of terror will be treated as though he were the opposing side in a war. That India will be at war with any perpetrator of terror, with any sponsor of terror, state, whatever, and will go after the terror infrastructure and will go all out to complete the job of dismantling terror infrastructure. And I think that point has been very well received by the Indian public. The fact is that the Indian public have become really disgusted with acts of terror and disgusted with the outside powers that are responsible for that. And this very clear stand of the Prime Minister has been very, very warmly welcomed by the people of India. And I'd like to say, so far the people of Gujarat are concerned, they are particularly happy for a simple reason that Gujarat is a coastal state very close to the Pakistan border. And from that point of view, now they can definitely feel more secure and assured. First, that our air defense are working well. Two, that there is seamless coordination between Army, Navy, and Air Force. And three, that there will be a robust response to any act of terror. So it will be a very foolhardy group of people who carry out acts of terror against India. Absolutely. Professor Nalapat, thanks very much for joining us and sharing your perspective. I'm also joined by my colleague Mohit Bhatt. Mohit, of course, a very crucial visit by the Prime Minister to his home state of Gujarat. The visuals that we have been seeing since yesterday and this morning reflect what the country feels about Operation Sindoor. But the fact that the Prime Minister will be inaugurating several development projects related to urban development, health, as well as, water supply, reflect also the kind of priorities that the Prime Minister has for the state, considering that it's a border state and therefore infrastructure is required. Well, yes, in fact, and Prime Minister Narendra Modi, since he has become the Prime Minister, has always
always said that it's about the his all visits are about development push. Now we know for a fact that how projects worth rupees 80,000 crore will be inaugurated and laid foundation by Prime Minister Narendra Modi in these 2 days. Yesterday Prime Minister visited Vadodara, Bhuj, and clear message was given to Pakistan that if you will come in our country and you will send terrorists to our country, there will be a strong retaliation. And perhaps that is why we saw that how there was a sea of crowd over there in Gujarat to welcome Prime Minister Narendra Modi because this is also his first visit post Operation Sindoor to Gujarat. Now today he is in Gandhinagar, and we know for a fact that how a souvenir of BrahMos missile has been presented to Prime Minister Narendra Modi. So this is the message from people of India to Prime Minister Narendra Modi, that how they respect the valor of Indian Army, they celebrate the respect of Indian Army, but they also stand with Prime Minister Narendra Modi and the government when it comes to taking action against Pakistan. Now when it comes to development push, now when it comes to Pakistan, Pakistan is a failing economy. They believe in harboring terrorists, they believe in breeding terrorists, but we here in India are the 4th largest economy, and we aim to become the 3rd largest economy by 2027, 2028, and hence development push, infrastructure push, the capital investment is all we believe in, and hence this visit of Prime Minister Narendra Modi is very important. On one hand, he has given message to Pakistan from Bhuj that terrorism will not be tolerated. The second message is through this trip is that India believes in development, India believes in infrastructure, and perhaps that is why this particular visit is all about the development push of Prime Minister Narendra Modi's government. Back to you. Absolutely, and not only just the development push, but the fact that people have been thanking the Prime Minister for Operation Sindoor also reflects that this visit is also about how the citizens feel about Operation Sindoor, how they have been taking pride in the fact that our armed forces have been giving a befitting response to Pakistan and the terror masters sitting there who are always working against India. In fact, the Prime Minister himself, when he addressed that public gathering in Vadodara as well as later in Lahore, had declared that, this is a changed India, that this is going to be the new red line against terror that India has drawn, and we will be following it. Enough of documenting and dossiers and plain speak. We will be seeking action from the Pakistani side as well. As far as terror is concerned, they need to walk the talk. They might say a lot of things, but they clearly don't act upon it, and they play victims in front of the world. And that is exactly what the Prime Minister had spoken about yesterday. In fact, a very strong, stern message that Prime Minister Modi had given from the soil of Gujarat. Hiten, my colleague, has been tracking the visit of the Prime Minister. He's at the moment in Gandhinagar. Hiten, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? अभी मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं, कुछ देर पहले प्रधानमंत्री को फेलिसिटेट भी किया गया, उनका एक वार्म वेलकम हुआ, साथ ही साथ उनको ब्रह्मोस मिसाइल का एक छोटा सा वो सिंबॉलिक एक गिफ्ट भी दिया गया, ये दिखाने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेस है and that people are proud of what the government and the armed forces have done. बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं गुजरात के लोग देश में सभी को, सिर्फ गुजरात ही नहीं, देश में सभी को प्राउड फील होता है किस तरीके से भारतीय सेना ने शौर्यता दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली अंजाम दिया है। तो उसकी ये झलक थी जो 2 दिनों से सड़कों पर दिख रही थी। हजारों की भीड़, वडोदरा में 25,000 की भीड़, दाहोद की सभा में 1 लाख की भीड़, भुज में रोड शो में करीब 15,000 की भीड़, भुज की सभा में 1 लाख की भीड़, अहमदाबाद के रोड शो में 50,000 का क्राउड, आज गांधीनगर के रोड शो में 25,000 का क्राउड, और अभी गांधीनगर में महात्मा मंदिर में जहां पर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए वहां पर भी हजारों का क्राउड जो है वो उनके सामने बैठा हुआ है। हालांकि इसी के चलते वो मोमेंटो जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरीके से पराक्रम दिखाया, जिस तरीके से पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है जहां से लगातार भारत में नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाता था, इसलिए उन बड़े अड्डों को टारगेट किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए टारगेट किया गया। तो वो एक शौर्यता का, पराक्रम का एक तस्वीर इस वक्त देशवासियों के सामने वो ब्रह्मोस की दिखी है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को वो मोमेंट
मोमेंटो भी ब्रह्मोस मिसाइल का ही दिया गया है। अब से कुछ देर बाद गुजरात के मुख्यमंत्री अपनी स्पीच देंगे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच होगी जो गुजरात के शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ पर होगी। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि वो 5000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देश को देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो न्यू इंडिया की झलक प्राइम मिनिस्टर के आज के इस प्रोग्राम से, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के इस प्रोग्राम से निश्चित तौर पर दिखेगी कि न्यू इंडिया क्या है, नया इंडिया क्या है। नया इंडिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी चालू रखता है और नया इंडिया देश की इकोनॉमी भी लगातार बढ़ाते रहता है। जैसे हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं, अब 2027 का टारगेट रखा है कि तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है, तो कहीं ना कहीं वो न्यू इंडिया की झलक आज के इस कार्यक्रम से दिखेगी कि आने वाले एक साल में सिर्फ गुजरात के शहरों की बात नहीं करेंगे बल्कि देश के अन्य सभी छोटे बड़े शहरों को लेकर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर का एक विज़न हमें दिखाई देगा कि कैसे उन्हें भी आगे बढ़ाया जाएगा और कैसे सेना को भी सशक्त किया जाएगा, मजबूत और किया जाएगा, और वो भी मेक इन इंडिया मॉडल पर। ये तक कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के इस आज के प्रोग्राम से उनका ये विजन जो है दिखेगा। हालांकि जो 20वीं वर्षगांठ जो मना रहे गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ, वो 20वीं वर्षगांठ को वो जरूर याद करेंगे क्योंकि वो ये 20 साल उनके जीवन के बेहद ही खास कहे जाएंगे, क्योंकि 20 में से 10 साल जो है वो उन्होंने जिस तरह से बिताए और उस 10 साल में जैसे उन्होंने एक बड़ा चैलेंज अपने हाथ में लेते हुए गुजरात के सिटीज़ को, शहरों को मेट्रो सिटी, स्मार्ट सिटी का दर्जे तक पहुंचाया है, तो वो कितनी मुसीबत से कैसे अपने दम पर पहुंचाया है उसकी झलक तक दिखेगी। जी हितेन, बिल्कुल। Viewers, Hiten has been telling us how crucial, how significant the visit of the Prime Minister is as far as urban development is concerned. Remember, as citizens take pride in what Operation Sindoor has been able to achieve under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, what we're also seeing is that the Gujarat urban growth story is being celebrated, and in fact 20 years of the urban development year that was started back in 2005 by the Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat is now being marked today. We will keep getting you updates on the Prime Minister's visit, but at the moment it's time for a short break. News and updates will continue on the other side.